Good morning, class 4 students. Welcome back to online class. Well, I am your English reader teacher, and today I'm welcoming you on third terminal online class. Okay, so now open your English reader book, page number 60, chapter number 11. An interview with Sir Edmund Hillary. Okay, so through this chapter, we will learn about the first successful climbers on Mount Everest, which is Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay. Okay, so गुड मॉर्निंग क्लास 4 स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश की बुक पढ़ने जा रहे हैं और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्ड टर्मिनल ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, सो आज हम लोग इंग्लिश की बुक पढ़ने जा रहे हैं, तो मेरे साथ खोलिएगा पेज नंबर 60, चैप्टर नंबर 11, एन इंटरव्यू विथ सर एडमंड हिलरी। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे या फिर जानेंगे सर एडमंड हिलरी के बारे में और साथ ही साथ टेंजिंग नॉर्गे के बारे में। ये दो वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग की थी। फर्स्ट सक्सेसफुल क्लाइंबिंग मतलब माउंट एवरेस्ट में पहुंचे थे, पहले व्यक्ति हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। Okay, students, I'm going to read this chapter, and what you will do, you will just repeat after me. मैं ये चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ और आप लोग क्या करेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। ओके ओके, नाउ सो बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 60, चैप्टर नंबर 11, एन इंटरव्यू विथ सर एडमंड हिलरी। हो गया, खोलिए। ओके, नाउ रिपीट आफ्टर मी। An interview with an interview with Sir Edmund Hillary. Repeat after me. Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay were the first two men to successfully climb Mount Everest. Sir Edmund Hillary was born in 1909 and grew up in Auckland, New Zealand. It was New Zealand that he became interested in mountain climbing. Although he made his living as a beekeeper, he climbed mountains in New Zealand, then in Alps, then in the Alps, sorry, and finally in the Himalayas, where he climbed 11 different peaks of over 20,000 feet. By this time, Hillary was ready to confront the world's highest mountain. Sir Edmund's life was darkened by the loss of his wife and daughter in a plane crash in 1975. He continued to occupy himself with environmental causes and humanitarian works on behalf of the Nepalese
people for the rest of his life. He died at home in New Zealand at the age of 88, mourned by his countrymen and by legions of admirers. Turn to the next page, page number 61. Around the world, in 1951, Hillary was invited to join a New Zealand climbing team that trekked in the Himalayas in the Himalayan mountains. Later he was chosen for an Everest exploration team led by his old hero Eric Shipton's Hillary. Eric Shipton's Hillary's great energy and mountaineering skills won him a spot on the 1953 British Everest expedition team. The British had been trying for nearly 40 years to be the first to scale the world's highest mountain. Finally, on May 29, 1953, Edmund Hillary and Sherpa Tenzing Norgay became the first two men to stand on the top of the world. To learn more about their adventure, read the following instructions he had with students in 1996. Question: how do you have enough energy to climb the Mount Everest? Answer: I was very fit and had much climbing experience. Question: I was wondering if you have any thoughts on the tragedy in the spring of 1996 on Everest, in which several people were killed. For example, do you think unacceptable risks, unacceptable risks were taken? What might you have done differently? Answer: Many people have many people have been getting too casual about climbing Everest. The forecast I forecast a disaster many times. Question: how do other mountains you have climbed can be compared to Everest? Can you think of another peak that challenged you as much as Everest? That challenged you as much as Everest? Answer: other mountains have more technically difficult routes
than Everest. But none have the but none have that last 8,848 meters of extreme height. Question: how did you sleep on Mount Everest? Answer: sleeping is always difficult at high altitude, so we didn't sleep much. Question: what was the most difficult part of your adventure? Answer: strong motivation is the most important factor in getting, turn to the next page, you to the top. Question: did you have to carry all your own food? Did you have to carry all your own food, or was there some food available on the mountain, such as plants? Answer: we carried all our food. Question: I know from reading your story that you were trained for a long time and also are a courageous man. But was there you time up on Everest when you were scared? Can you describe what was happening? Answer: I was scared many times on Everest, but this is all part of my challenge, all part of the challenge. When I fell down a crevasse, it was pretty scary. Question: what did it look like up that high on the mountain? How long did it take you to climb Mount Everest? Answer: from the summit, from the summit we could see at least 100 miles in every direction. It took 7 weeks to go from base camp to the top, but only 3 days coming down. Question: how many pounds of food did you take? What kind of food did you eat? Answer: high on mountain, food is repugnant and you have to make yourself eat. Most of our energy came from very sweet drinks, came from very sweet drinks, mostly hot weak tea with lots of sugar. Question: how did you feel when you reached the top of Everest? Were you able to see anything? What did the world look like from up there? What did the world look like from up there? Answer: on the summit of Everest, I had a feeling of great satisfaction to be first there. We could see vast distance in every direction, mostly mountains, glaciers, and high plateaus. Question: how does it feel to be called Sir? What
is like being knighted? What is what it like being knighted? That must be really cool. Answer. Becoming a sir is slightly uncomfortable at first. Although, turn to next page. It is a considerable honor. It is amazing how quickly you become accum- accum- accustomed to it. Accustomed to it. I still have the same friends and a similar way of life. The actual knighting look, the actual knighting took place in Buckingham, Buckingham Palace by the Queen of England. It was very impressive ceremony. Question: is there some message you would like to give to the young people and kids? Answer: yes. I would like to tell all the kids and the young people that challenges challenges are a part of our life, and we should never give up our efforts just because of these challenges. Face the challenges courageously and emerge winner. There is no other feeling like the feeling of being a winner. So set your goal and start working hard to attain the goal. Okay, now students, we finish up all the reading. So I'm going to explain this chapter in Hindi. So हम लोगों ने खत्म कर लिया, तो मैं इस चैप्टर को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, so that you will अंडरस्टैंड क्लियरली, है ना? तो चलिए ध्यान दे करके सुनेंगे सभी लोग. Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay were the first two men to successfully climb Mount Everest. एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्गवे ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले पहुंचे थे. सर एडमंड हिलेरी वॉज बॉर्न इन 1919 और एडमंड हिलेरी का जन्म 1919 में हुआ था. ही ग्रू अप इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड और ये जो बड़े हुए थे ये न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बड़े हुए थे, मतलब इनका जो घर है वो न्यूजीलैंड है. It was in New Zealand that he became interested in mountain climbing. और न्यूजीलैंड ही वो जगह है जहां पर वो इंटरेस्टेड हुए माउंटेन क्लाइंबिंग में, पहाड़ों पर चढ़ने पर. वो वहां पर उनके अंदर चढ़ने की भावना जगी, मतलब पहाड़ों पर चढ़ना है, ऐसा कुछ सीखना है, ये भावना उनको न्यूजीलैंड में जगी. Although he made his living as a beekeeper, और वो अपना जो जीवन है वो एक बी कीपर के रूप में थे, मधुमक्खी पालक के रूप में थे, मधुमक्खी को पालने वाले के रूप में थे. मतलब वो अपना जीवन जो गुजारे थे वो एक मतलब उनका जो काम था वो था मधुमक्खियों को पालन करना, पालना, उनको संभालना. ही क्लाइम्ड माउंटेन इन न्यूजीलैंड, और वो न्यूजीलैंड में उन्होंने पहाड़ चढ़े कई सारे. देन इन एल्प्स एंड फाइनली इन द हिमालयास, और उसके बाद फिर एल्प्स पर्वत चढ़ा उन्होंने, उसके बाद फिर हिमालय पर्वत चढ़ा. वेयर ही क्लाइम्ड 11 डिफरेंट पीक्स
of over 20,000 feet। और उस ऐसे उन्होंने जहां हिमालय में लगभग 11 पीक्स चढ़े, मतलब 11 चोटियों पे चढ़े, लगभग 20,000 फीट पर। तो 20,000 फीट इतना ऊंचाई या इतना दूरी उन्होंने तय की। और लगभग 11 पीक वो चढ़े। बाय दिस टाइम हिलेरी वॉज रेडी टू कन्फ्रंट कॉन्फ्रंट द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन। और इसके बाद उन्होंने अपने आप को तैयार किया कि वो दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन पर चढ़े। सर एडमंड life was darkened by the loss of his wife and daughter in the plane crash in 1975। तो जो सर एडमंड जो थे, जिन्होंने इनकी जो जीवन था वो अंधेरा में हो गया तब जब इनकी पत्नी और इनकी बेटी की मौत हो गई एक प्लेन क्रैश में। उनकी डेथ हो गई एक प्लेन क्रैश में 1975 में। तो इनकी पत्नी और इनकी बेटी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई। तो एडमंड हिलेरी का जीवन जो था पूरा अंधेरे से भर गया, इनके पास कोई आशा नहीं रही। But he continued to occupy himself with environmental causes and humanitarian works on behalf of Nepalese people of the rest of his life। और इन्होंने अपना जीवन जो है वो अब नेपाली पीपल लोगों के लिए, समाज की सेवा के लिए, या फिर वातावरण या पर्यावरण सुरक्षा के लिए इन्होंने अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। मतलब अब इन्होंने अपना जीवन इन सब चीजों में लगा दिया। ही डाइड एट होम इन न्यूजीलैंड। और ये न्यूजीलैंड में अपने घर पे इनकी मृत्यु हुई जब वो 88 वर्ष के थे। 88 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई। और पूरी जो इनके जो पहचानने वाले लोग थे, इनके पहचानने वाले लोगों में मातम छा गया, शोक हो गया। और सभी जो भी इनको जानने वाले थे या फिर जो योद्धा थे, जो इनके साथ काम करते थे, वो सारे लोग इनके मृत्यु पर शोकित हुए बहुत ज्यादा। सो पूरी दुनिया से सारे लोग शोकित हो गए। 1951 में हिलेरी को इनवाइट किया गया न्यूजीलैंड में क्लाइंबिंग टीम में, जो हिमालय माउंटेन पर चढ़ेगा। तो उनको 1951 में इनको वहां पे बुलाया गया। लेटर ही वॉज चूजन फॉर एन एवरेस्ट एक्सप्लोरेशन टीम लीड बाय हिज ओल्ड हीरो। और बाद में ये एवरेस्ट एक्सप्लोरेशन टीम में इनको चूज किया गया। और वहां पर इनको लीड कर रहे थे इनके हीरो, मतलब इनके पुराने हीरो एरिक शिप्टन। एरिक शिप्टन जो थे इनके हीरो थे इस माउंटेनियरिंग के, तो वो इनको लीड कर रहे थे। Hillary's great energy and mountaineering skill won him a spot on 1953 British एवरेस्ट एक्सपेडिशन टीम। और इनके अंदर की जो ताकत थी और ये जो माउंटेनियरिंग पहाड़ पे चढ़ने की जो इनकी स्किल्स थी, इन स्किल्स की वजह से, इनका हुनर की वजह से ये 1953 में ब्रिटिश एवरेस्ट एक्सपेडिशन टीम में इनको शामिल कर लिया गया। The British had been trying for nearly 40 years to be the first of scale the world's highest mountain। और ब्रिटिश जो थे वो 40 British has trying to for nearly 40 years to be first to scale world's highest mountain। और जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो 40 साल से वो उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे वहां पे। कोशिश कर रहे थे कि कोई भी वहां पहुंचे, उनकी टीम वहां पहुंचे या कुछ भी, लेकिन वो 40 साल से तैयारी कर रहे थे। फाइनली ऑन May 29, 1953, Edmund Hillary and Shipra Tenzing Norgay became the first two men to stand on the top of the world। और एडमंड हिलेरी और शिर्पा टेंजिंग नॉर्गे ये दो ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने दुनिया के सबसे ऊंची जगह पर खड़े होने का खिताब प्राप्त किया। To learn more about their adventure, to read the following interaction he had with the students
in 1996। तो अगर उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हम लोग, ये इंटरैक्शन है यहाँ पे, कुछ जो स्टूडेंट्स थे 1996 में, कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने अ, कुछ वार्तालाप किया था, बातचीत की थी। और इस बातचीत में उन्होंने कई सारी बातें पूछी थी। तो अगर आप हम लोग कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ से इस बातों को सुन करके या पढ़ करके हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डिड यू हैव इनफ एनर्जी टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट? तुम, आपके पास में इतनी ताकत कहां से आई कि आप पहाड़ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पाए? द आंसर, उन्होंने आंसर दिया, आई वॉज वेरी फिट एंड हैड मच क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस। और वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत फिट था और मेरे पास बहुत क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस था, मुझे पहाड़ों पे चढ़ने का अनुभव था। Next question. I was wondering if you have any thoughts on the tragedy in the spring of 1996 on Everest, in which several people were killed. For example, do you think unacceptable risks were taken? What might you have done differently? तब वो बोल रहे हैं कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं आश्चर्य करता हूं कि 1996 की ट्रेजेडी जो हुई थी, 1996 में माउंट एवरेस्ट में क्या हो गया था, एक तूफान आया था और काफी लोग वहां पे मर गए थे। तो 1996 की जो ट्रेजेडी हुई थी जिसमें माउंट एवरेस्ट में कई सारे लोग मर गए थे, तो उसके एग्जाम्पल के तौर पे आप ये बता सकते हैं कि कौन सा जो जो रिस्क था, जो अनएक्सेप्टेबल रिस्क था, वो लिया गया था। और आपने ऐसा क्या अलग कर लिया कि आप वहां पर उस तरीके की प्रॉब्लम्स से निकल गए, या फिर आप वहां पे क्या करते ऐसा? तो आंसर उन्होंने किया, मैनी पीपल हैव बीन गेटिंग टू कैजुअल अबाउट क्लाइंबिंग एवरेस्ट। तो उन्होंने आंसर किया कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना बहुत ही इजी है, ये बहुत कैजुअल ले लेते हैं एवरेस्ट पे चढ़ना। आई फोरकास्ट ए डिजास्टर मैनी टाइम्स। और उन्होंने कहा कि मैंने कई बार एक घटना का पूर्वानुमान लगा करके बोला है, मैंने कई बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू अदर माउंटेन्स यू हैव क्लाइंब्ड कैन बी कंपेयर टू एवरेस्ट? उन्होंने कहा, क्वेश्चन पूछा कि कैसे दूसरे माउंटेन जो हैं वो एवरेस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं आप? कैन यू थिंक ऑफ अनदर पीक दैट चैलेंजेस यू एज मच एज एवरेस्ट? और फिर उन्होंने कहा कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे पहाड़ हैं जो आप एवरेस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा पहाड़ था जो एवरेस्ट जैसा चैलेंज फील कराया आपको? तो उन्होंने आंसर किया, अदर माउंटेन्स हैव मोर टेक्निकली डिफिकल्ट रूट देन एवरेस्ट। तो उन्होंने कहा कि एवरेस्ट के अलावा जो दूसरे पहाड़ थे या माउंटेन थे, वहां पर जो रूट था जाने का, वो टेक्निकली बहुत मुश्किल था दूसरे पहाड़ में। लेकिन बट नन हैव दैट लास्ट 8,848 मीटर्स ऑफ एक्सट्रीम हाइट। दूसरे पहाड़ों में जाने का जो रास्ता था वो भले ही कठिन था, लेकिन दूसरे जो पहाड़ थे, कोई ऐसा और पहाड़ नहीं था जो 8,848 मीटर ऊंचा हो। तो इसका मतलब है कि एवरेस्ट ही सबसे मुश्किल उनका ये था, माउंटेन क्लाइंबिंग का सबसे मुश्किल माउंटेन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्लीप ऑन माउंट एवरेस्ट? आप पहाड़ों पर कैसे सोते थे? तो उन्होंने आंसर किया, स्लीपिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट एट हाई एल्टीट्यूड, सो वी डिड नॉट स्लीप मच। वो बोल रहे हैं कि सोना, पहाड़ों पर सोना तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत ऊंचाई पर सोना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग बहुत कम सोते थे, बहुत थोड़ा सा सोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर एडवेंचर? आपके इस रोमांच भरे काम क्या सबसे मुश्किल चीज क्या थी?
तो उन्होंने आंसर किया स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। उन्होंने बताया कि दृढ़ संकल्प जो है या फिर दृढ़ संकल्प जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है किसी गेटिंग यू ऑन द टॉप। तो दृढ़ संकल्प जो है वो आपको ऊंचाई पर पहुंचाने पे बहुत ही जरूरी काम करता है। सो स्टूडेंट्स, टिल हियर वी फिनिश। हम लोगों ने पेज 61 तक फिनिश किया है। ऑन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फिनिश रेस्ट ऑफ द पार्ट, और अगली वीडियो लेसन में हम लोग आगे की चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है? सो योर होमवर्क इज फाइंड द वर्ड हियर। ये क्वेश्चन नंबर ए जो है, यहाँ पे आपको वर्ड्स खोजने हैं। इनके अपोजिट, जैसे हाईएस्ट का क्या होता है? लोवेस्ट। यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा लोवेस्ट, इसको खोजना है। तो इनके अपोजिट यहाँ खोज करके आपको लिखने हैं। ठीक है? आई होप यू कैन डू दिस वेरी वेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, स्ट्राइक द ऑड वन आउट। इसमें से जो भी गलत होगा उसको स्ट्राइक कर देना है, उसको काट देना है। तो जो गलत होगा मतलब कि ऑड जो होगा उसको, जैसे कि यहाँ पे माउंटेन, हिल, पीक्स एंड वैली, तो इसमें कौन सा चीज अलग होगा? वैली, है ना? बाकी सब पहाड़ों के चोटियां के बारे में बात की जा रही है और ये घाटी के बारे में बात की जा रही है। वैली मतलब घाटी होता है और सारे पहाड़ होते हैं, है ना? तो वैली को कट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ऑन द नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल फिनिश अप रेस्ट ऑफ द पार्ट। ठीक है? So this is for all today's students. So keep learning. One more thing. Here is some word meaning. Question. Trackled, पहाड़ों पर पैदल लंबी यात्रा करना। Exploration, खोज करना। Curved, दरार या खाई। Repugnant, घृणास्पद या विरुद्ध। Knighted, योद्धा। Beekeeper, मधुमक्खी पालक। Humanitarian, परोपकारी या मानवतावादी। लीजेंस, बहुत बड़ा समूह। इंटरैक्शन, वार्तालाप। समिट, सम्मेलन या शिखर सम्मेलन। ठीक है? सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।